So I must have to means speak the French, at least basics also. Okay, so Question and basically your main purpose is in the speaking part, right? yeah, speaking part. Okay, perfect then. So is it any plan to give the exam as well, or just you are looking for the speaking? That is why I am struggling last 6 months. I can't able to manage myself. Like I'm very like fearing. I don't know whether I will learn or not because it's very complicated for me and very difficult also. I'm not getting that much confidence. If I learn something, then only I can go for exam and I can earn the certificates. So, but basic things means myself only. I don't have confidence how I can go for exam. So that is what. If they are talking, I am very much confused. If you are talking or our colleagues talking, so I can understand bit. But if here the French people talking, I'm totally confused and Okay, no worries. So today basically we're gonna start with the very basic things in French itself. Okay, Mhm. and first of all, let me explain you as well how we actually gonna move. Just a second, Okay. let me share the screen. And please do not think about these 18 hours, 20 hours. Please keep on teaching me, and whatever the possibility we can extend. Okay. And Don't worry, Rajan. There is no mm, issue in that. What is it now? Like, there are many students over here who are just looking for the exam. Some of they're okay. having, okay, like, we just want to give exam it anyhow. That's our main target. Some of our Okay. For just we're gonna have a fluency in French. So that is the only reason that I ask you that what are you looking for basically? okay. No problem. Okay. Yeah. Screen is visible? Yes. Yes. Some notes came. Yeah. So first of all, if I just talk about the French itself, as Mhm. basically you're looking for the speaking part, Yeah. right? Speak. So what is it? Yes. How we gonna move? The very first thing we're gonna do is the basics. It's not basics in the speaking part, but in any language, some basics. What I mean is like the alphabets. What is the pronunciation of alphabets? You should know that. How we say weeks, months, Hmm. numbers, how we all use these things in particular in the French language, how we pronounce it. So that is the basic things we're gonna cover first of all. Okay. Okay, after covering all the basics, the second thing you're gonna cover is about your basic phrases. Now, what are these basic phrases itself? Like bonjour, comment ça va, comment allez-vous? What does that mean? Hello, how are you in the formal or Great. the informal matter? In speaking part, the two main things are very important, whether it is in English or any other language. The very first one is basically your formal conversation. Second one is your informal conversation. Now, suppose that I'm just saying, how are you? So for the informal, I will just say, come ça va? That is Hmm. means how are you in the informal. But if I want to say same line into the basically formal conversation, then it will be comma talevu. So this is basically means how are you in the formal. So as you told that you are having a conversation with the clients itself. So definitely that you're gonna follow the formal conversation. Yes, but you should also know the informal one. So like Yes. this is the basic things we actually follow with. Clear? Okay. Clear. Now, for now, once we gonna reach over here, once we gonna move to the basic phrases, after that I gonna elaborate you further that how we gonna move in the next four. Okay. Clear? Okay. 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 Now the very first thing we're gonna do is basically the alphabets.
one thing more, whatever we do in the class now, you have to do the revision of it as well. Because you already know that from Monday to Friday there is no class, so there is a gap in between. And this is Yes. a type of language you have to do on the regular basis. Okay. Okay. Now, Okay. what is it? I'm gonna speak the alphabets. You have to just repeat after me, or just a second. Are you in Pune or which location? No, I'm basically in Gurgaon. गुड़गांव. We तब तो have अच्छा like in होगा. Delhi. तब तो अच्छा है, हिंदी में भी समझ में आएगा कुछ. Yes, yes, obvious. अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज इतनी टफ नहीं है. समवेयर व्हाट इज इट कि हमारा ना जो पैटर्न है कि हम प्रैक्टिस के फॉर्म में, बस वो मैटर करता है. फ्रेंच में अगर मैं बोलूँ ना, दो चीजें इंपॉर्टेंट है. अगर आपको फ्रेंच की प्रोनाउंसिएशन आ गई समझ में, तो कोई टफ ही नहीं है चीज, क्योंकि बाकी आपकी लर्निंग पे डिपेंड है. आप जितना ज्यादा यू नो द प्रोनाउंसिएशन, हम कैसे किसी चीज को प्रोनाउंस कर रहे हैं, उतना ही आप रीडिंग कर रहे हो और उस चीजों को उतना ही सुन रहे हो, वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है. ओके. ठीक या है. राइट. सो अब मेन मैं, फोकस प्रोनाउंसिएशन. यस, मेन फोकस होगा वो प्रोनाउंसिएशन पे होगा कि आप एक्चुअल में फ्रेंच में कन्वर्सेट कर पाए. ओके. ठीक है. चलो, फ्रेंच के हम बेसिक पहले अल्फाबेट से स्टार्ट करेंगे. जस्ट रिपीट आफ्टर मी. ए, आ. ए आ. बी, बे. बी बे. सी, से. सी से. डी, दे. डी दे. ई, उ. ई उ. एफ, इफ. एफ. एफ. जी, जे. जी जे. नाउ, जो हम फ्रेंच में है, जी को हम जे में प्रोनाउंस करते हैं, एंड जे को हम जी में प्रोनाउंस करते हैं. ओके. ठीक है. जी, वेरी गुड. जे. जी जे. एच, आश. एच आस. नाउ, यहाँ पे क्या है, एच जो है हमारा हमेशा साइलेंट रहता है फ्रेंच में. हम कभी भी एच अल्फाबेट को प्रोनाउंस नहीं करेंगे. ओके. ठीक है. एच ऑलवेज रिमेन साइलेंट. एच, साइलेंट. आश. एच आश. आई, ई. आई ई. जे, जी. जे जी. ओके. के, का. के का. एल, इल. एल एल. एम, एम. एन एन. एम, एम. एम एम. नॉट एम. आपको इसको आई के साथ प्रोनाउंस करना है, या ई के साथ, जैसे होता है इम. जैसे हिंदी में अगर बोलो इमली, तो वो जो ई है ना, उसके फॉर्म में इम. सो एम एम. हाँ. एन, इन. एन एन. ओ, ओ. ओ आओ. पी, पे. पी पे. क्यू, कू. क्यू कू. आर, एर. आर एर. एस, इस. एस एस. टी, ते. टी ते. यू, ऊ. यू ऊ. वी, वे. वी वे. डब्ल्यू, डब्ल्यू, वे. डब्ल्यू डब्ल्यू. एक्स, एक्स. एक्स एक्स. वाई, इग्रेक. वाई इग्रेक. एंड जेड, जिद. जेड जेड. जिद, ज, जिद. जिद. ओके. जिद. यस. जेड जिद. ओके. अब वीक्स. मंडे, लुंदी. मंडे लुंदी. ट्यूसडे, मार्दी. ट्यूसडे मार्दी.
Wednesday, mercredi. Wednesday, mercredi. Thursday, jeudi. Thursday, jeudi. Friday, vendredi. Friday, vendredi. Saturday, samedi. Saturday, samedi. Sunday, dimanche. Sunday, dimanche. क्या अब इसको एक बार दोबारा रिपीट करो आप. Monday, lundi. Lundi. uh, Tuesday, mardi. Wednesday, mercredi. Thursday, jeudi. Friday, vendredi. Saturday, samedi. Sunday, dimanche. परफेक्ट. हमारे पास आ जाते हैं मंथ्स. जनवरी, janvier. January, janvier. February, février. February, février. अब यहाँ पे देखना है, ये हमारा फ्रेंच वर्ड है, ये हमारा प्रोनाउंसिएशन है. मतलब इस Février. फेवरिए. February, février. मार्च, मार्स. March, mars. अप्रैल, अvril. April, avril. मई, मैं. May, may. जून, जुआन. June, juan. जुलाई, जुए. July, juillet. अगस्त, ऊत. August, août. सितंबर, सितंबरू. September, septembro. अक्टूबर, अक्टोबरू. October, octobro. नवंबर, नवंबरू. November, novembro. दिसंबर, दिसंबरू. December, decembro. परफेक्ट. अब आप इसको रिपीट करो. January, janvier. हम्म. February, février. फेब्रुअरी. Février. हम्म. March, mars. हम्म. April, avril. हम्म. May, May. हम्म. June, Juan, Juan. हम्म. July, Juillet. हम्म. August, Août. हम्म. September, Septembro. हम्म. October, Octobro. हम्म. November, Novembro. नवंबरू. Dec- Novembro. हम्म. December, Decembro. परफेक्ट. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं अब नंबर्स. जीरो, zero. Zero, Zero. zero, zero. One, un. One, un. Two, do. Two, do. Three, toi. Three, toi. Four, quatro. Four, quatro. Five, cinq. Five, cinq. Six, six. Six, six. Seven, sept. Seven, sept. Eight, huit. Eight, huit. Nine, neuf. Nine, neuf. 10, dix. 10, dix. 11, onze. 11, onze. 12, douze. 12, douze. 13, treize. 13, treize. 14, quatorze. 14, quatorze. 15, quinze. 15, quinze. 16, seize. 16, seize. 17, dix-sept. 17, 17. 18, dix-huit. 18, 18. 19, dix-neuf. 19, 19. 21. 21. अब इसको रिपीट करो.
0 0, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10, 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19, 21. परफेक्ट। अब ये सारी चीजें क्लियर है जो भी की है। Hmm. अब इसको आप खुद लिख लो, स्टार्टिंग विद अल्फाबेट्स। Okay. Just. नंबर्स लिखा हुआ है ओके। और वीक वीक लिखना है। और अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं? हाँ, अल्फाबेट और नंबर लिखा हुआ है, वीक नहीं है। वीक्स और मंथ्स? हाँ, वीक वीक नहीं है, मंथ्स भी है। ठीक है।